Once again. Okay, we are live now. Okay. Good evening, all. This is Dr. Gaurav. We are here to discuss about newly launched therapies by Kadla. As we know, in old time, we have to use 5 time intramuscular injection for anti-rabies vaccination. But now we have 3 doses of anti-rabies vaccine. 3 doses of anti-rabies vaccine. This is the rabies. Now we are going to share this PDF. Okay. As we can say, this is rabies. Firstly, we will discuss about virus of rabies. This is rhabdoviridae. As we know, the virus is a content of N protein, P protein, M protein, and G protein. This is an enveloped RNA virus. Rabies is a zoonotic disease which is caused by rabies virus, and the virus encoded in 5 structural protein, as we discussed. As we all know, rabies is 100% mortality disease. Here is epidemiology. Globally, 59,000 rabies deaths per year, and in India, about 2,000 rabies deaths per year, and 91% deaths in rural area because the lack of vaccination or lack of knowledge. So, rabies is 100% fatal, but 100% vaccine preventable disease. Evaluation of rabies, as we can see, in old time, like 1885, when we use nervous tissue, like attenuated vaccine, which is prepared by spinal cord, and it have 31 injections for increasing immunogenicity. With the time, slowly we developed, and we came to 14 injection, in which each 0.5 ml daily. When we introduced cell culture inactivated vaccine, cell culture, it have 5 injections, which we are using now. But thanks to Kadila, who launched Theravies, it will be less painful for patient, and also much easier for follow-up next doses of vaccine. The benefits are, firstly, protein subunit vaccine prepared by VLP platform technology, and first vaccine with 3-dose intramuscular regime. Better compliance due to easy to flow regime and less visits. Convenience, ready to use, no reconstruction needed. Here's VLP technology. As we can see, a native virus and G proteins are difficult to stabilize. G protein isolation using VLP technology, purified and stabilized by Cadla Pharmaceuticals Limited. Virus-like particle or protein complexes exist as a nanoparticle. Virus-like proteins are similar to native virus particle, but that do not contain the viral genome. They cannot replicate, but can mimic the viral antigenicity without being pathogenic. They are capable of introducing a strong humoral and cellular immune response, VLP as vaccines. Here's VLP technology. Original research article, a novel recombinant rabies G protein vaccine, rabies, a VLP based rabies vaccine. Dr. Sumit Podar, Dr. Ashok Agrawal, Dr. Amit Soni, Dr. Seema Sharma. They are just
released a journal, APCRI, so we can visit that. There is clinical phase 2 study design and seroprotection data. Study design, we have 0 to 3 2 doses and 0, 3 and 7 3 doses. This is a clinical study phase 3, safety and immunogenicity of a novel 3-dose of recombinant nanoparticle rabies G protein vaccine administered at simulated post-exposure immunization, a randomized comparator-controlled multi-center phase 3 clinical study. Phase 3 study is phase 3 study in which the rabies 0, 3 and 7 days regime and old regime was 0, 3, 7, 14 and 24. This randomized comparative controlled multicentric study, total 800 randomization. To demonstrate non-inferiority of the test vaccine to comparator vaccine, there is primary objective. Subject with seroprotein at 14 days post first dose seroprotein RNA virus. This is the result. The results were consistent across different age group and genders. Observed a difference 1.52% with a pre-specified margin of -4%. Non-inferiority for seroprotein, seroprotection, primary endpoint day 14 and 42 were met. Test and comparator are identical in seroprotection rate, both on days 14 and 42. There is study conclusion. Rabies was non-inferior to reference vaccine, less adverse and effects compared to reference vaccine, and novel 3-dose rabies was found to be safe and immunogenic. It was comparable to 5-dose of WHO qualified vaccine. And the awards, obviously, they deserve. So, thank you. Thank you, Dr. Gaurav. To complete a medical session of rabies and give some valuable information to our viewers. Some queries come from viewers. Okay. Can I represent in front of you? Yes, please share. Sir, one viewer from Sri asked You are not you, audible clearly. Hello. You okay. Not audible. Just 1 minute. Sir. Okay. So I am audible now? Yeah. So one viewers of history to Okay. Regarding doses. Okay. As we already told, doses or 5 doses, and in no. which days, how many days it will be completed? Okay. Rabies is a 3-dose of anti-rabies vaccine. That's why TH for 3 and rabies for anti-rabies. Okay. 3 doses, 0 on day of 0. It means 0 day, 3rd day, and 7th day. And the day when you got bite by any animal or any animal. So on that day is 0 day, and after 2 days means it's 3 days. 0, then 3rd day, then 7th day. It will be 3 doses. Okay, sir. Any so queries? Yeah. Hello. Yes. Hello. One more queries come from Dhanwad. Okay. सर क्या वो हिंदी में जानना चाहते हैं कि क्या सर ये अगर किन्हीं को पहले दूसरे ब्रांड्स का अगर एंटी रेबीज दिया है तो उन्हें क्या हम लोग रेबीज दे सकते हैं?
देखिए जैसा कि हम लोग बताए, ठीक है, रेबीज 100% मॉर्टिलिटी के साथ आता है ये डिजीज, और इसमें कभी भी कोई भी रिस्क नहीं लिया जाता है। अगर अगर आपको बाइट हुआ है तो आपको दोबारा ये रिपीट करना ही होगा। आप जब अगर पहले आप ले चुके हैं एंटी रेबीज वैक्सीन और दोबारा अगर आपको बाइट होता है तो तब भी आपको ये शेड्यूल शुरू से लेना चाहिए। और रेबीज आने के बाद हमारे पास ये फायदा है कि अब हम लोगों को उतना ज्यादा दर्द नहीं होगा, ठीक है। पहले जो हम लोग आईएम इंजेक्शन ले रहे थे तो वो 5 लेना पड़ रहा था, ठीक है, 0, 3, 7, 14, 28। आप शायद वो कंप्लीट कर चुके होंगे वो वाला वैक्सीन में अगर एक बार, लेकिन अगर अब दोबारा आपको बाइट हुआ है और आपको दोबारा वैक्सीन लेना है आपको ये, तो आप इसको ले सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू सर। एंड सर थैंक यू वन मोर क्वेरी। जी। सर ये बच्चों में सर क्या ये सेफ है और कितने एज तक सर सेफ है? देखिए के लिए ये डोज डिपेंडेंट नहीं होता। 0.5 ml जो है ये सबके लिए है, ठीक है, और ये पूरी तरह बच्चों में सेफ है। अगर आपके बच्चे को किसी भी तरह का डॉग बाइट या कैट बाइट या कैट स्क्रैच या फिर जो भी मतलब अगर कोई भी कॉमन हाउस होल्ड एनिमल से अगर अफेक्ट हुआ है तो आप अपने छोटे से छोटे बच्चों को भी ये दे सकते हैं। ये सेफ है पूरी तरह। ओके सर, थैंक यू सर। एंड सर वन थैंक मोर यू क्वेरीज। सर ये क्या जी। मंकी बाइट में इसको यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मंकी बाइट में भी इसको यूज करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, कर सकते हैं। सर ये एक और क्वेरीज आ रही है, उसमें ये जी। पूछा जा रहा है कि अगर ये लेने के एक वीक बाद या 10 दिन के बाद अगर फिर से डॉग बाइट होता है या मंकी बाइट्स होती है तो क्या मुझे फिर से फ्रेश डोज लेना पड़ेगा, ये या ये इसी डोज से वो कंप्लीट हो जाएगा सर? नहीं नहीं, इसमें ही ये मतलब कंप्लीट हो जाएगा। अगर जैसे कि ये तो शेड्यूल चल रहा है 0, 3 और 7, ये तो है, तो इसका इफेक्ट तो रहता ही है ना कुछ दिन, मतलब उसके लिए अगर आपका ये वैक्सीन चल रहा है और बीच में अगर फिर से बाइट हो जाता है, अपने शेड्यूल को कंप्लीट कर लीजिए, वो हो जाएगा, काफी है। तो फिर से अगर उन्हें वो सर? जी हाँ सर, जी सर। नहीं नहीं, मतलब अगर फिर से बाइट होता है तो ये मतलब आपको अपना पूरा शेड्यूल कंप्लीट करना है, मतलब नया शेड्यूल नहीं चलाना है। मतलब अगर आपका चल रहा है वैक्सीन शेड्यूल में है, जैसे कि आज काटा, आप शाम में जाके इंजेक्शन ले लिए, ठीक है, और फिर नेक्स्ट अगर फिर आपको बाइट हो रहा है तो आप अपना ये कंप्लीट करेंगे, वैक्सीनेशन कंप्लीट करेंगे, सर जो इनका चल रहा है कहना है उसको कि कंप्लीट ये करें जी। शेड्यूल अगर मैंने फिनिश कर लिया इसके बाद अगर मुझे विद इन वीक फिर से डॉग बाइट्स या मंकी बाइट्स कुछ भी होता है तो क्या मुझे फ्रेश यानी शेड्यूल कंप्लीट करना पड़ेगा या वो शेड्यूल वो फॉर उस टाइम तक वो कवर करेगा? नहीं देखिए, अगर कुछ दिनों के बाद बाइट होता है तो ये कवर करेगा, लेकिन अगर मतलब है तो आप एक बूस्टर डोज फिर से ले सकते हैं, इसको रिपीट कर सकते हैं, वो खुद की सेफ्टी के लिए है। ओके सर। व्यूअर्स एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड्स? यस सर, वन मोर क्वेश्चन। ओके। क्या ये सर प्रेगनेंसी में सेफ है? जी बिल्कुल सेफ है, प्रेगनेंसी में भी ये सेफ है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, ले सकते हैं प्रेगनेंसी में भी इंजेक्शन। व्यूअर्स एनी क्वेश्चंस? सर वन मोर मेनली क्वेश्चन सर। रेबीज जी। जी जी। सर पेशेंट आस्क कि क्या इसको घर पे कैरी कर सकते हैं, घर पे रख सकते हैं या फिर सर मेडिकल स्टोर में ही रखना है, और अगर घर में रखना है तो कितने डिग्री में रखना है सर? ओके, इसको आप घर पर रख सकते हैं, अपने रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं। इसको स्टोर करने के लिए 6 से 8 डिग्री तक ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है घर पर स्टोर करने में, आप कर सकते हैं। देखिए मेडिकल स्टोर और घर पर मतलब क्या है कि दोनों जगह पे, अगर मेडिकल में भी है वो भी फ्रिज में रख रहे हैं, और आप अगर वो टेम्परेचर मेंटेन कर पा रहे हैं अपने घर पे, उसको हीट डायरेक्ट सनलाइट से बचा रहे हैं, हीट एक्सपोजर से बचा रहे हैं,
तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप घर पर सेफली रख सकते हैं, क्योंकि मेडिकल स्टोर घर पर रखने से बहुत सारा, जैसे कि आप घर में खाने के साथ या फिर अदर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के साथ अगर फ्रिज में रख रहे हैं तो देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर पर है एक्सीडेंटली गिरने का, टूटने का मतलब बस डर रहता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे अगर आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं घर पे इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घर पे भी स्टोर कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर वन मोर क्वेश्चन सर फ्रॉम जी। ग्रेड ऑल्सो। सर ये ओके। पूछ रहे हैं कि पहले मैं 5 डोज वाला डोज यानी इन्हीं को दे रहा हूँ, अगर 2 डोज लेने के बाद या तो एबिलिटी प्रॉब्लम्स या कुछ ऐसा होता है जो उनको नहीं मिल पाता है, तो क्या मैं फिर इसको इसको देके कंटिन्यू कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं। मतलब देखिए ये भी एंटी रेबीज वैक्सीन ही है, मैकेनिज्म वैक्सीन का सेम ही है, वैसे ये नर्व सेल्स पर ही एक्ट करता है, ठीक है। तो अगर ऐसा है एबिलिटी का प्रॉब्लम है तो, और आपके स्टॉकिस्ट के पास ये रेबीज के प्रोडक्ट हैं, तो आप मंगा के इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सर। व्यूअर्स एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चंस? व्यूअर्स, ये सर नो मोर वैक्सीनेशन। क्वेश्चन फ्रॉम व्यूअर ओके। साइड्स। ओके, देखिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि घर का कुत्ता है इसको तो सुई मिला ही है और कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। अगर घर का कुत्ता हो, वो रेगुलर वैक्सीनेशन में है, तब भी अगर वो बाइट करता है किसी को भी, तो आपको रेबीज का इंजेक्शन, एंटी रेबीज का इंजेक्शन लेना ही चाहिए। दूसरी बात कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड इतना लंबा होता है कि पता नहीं चलता, जैसे कि काट लिया कुत्ता, एक आध साल तक हुआ कि हाँ रे कुछ नहीं हो रहा, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, घाव भी सूख गया, लेकिन जो ये वायरस है ये रह जाता है शरीर में, और ये इंक्यूबेट करते करते इसका इफेक्ट आने में कई साल लग जाते हैं, कई बार तो मतलब 20-20 साल के बाद भी आता है। रेबीज का कब काटा था, तो हाँ 20 साल पहले कुत्ता काट लिया था, उस समय ध्यान नहीं दिया। और प्रॉब्लम ये होती है कि अगर सिम्टम्स आने शुरू हो गए तो फिर हम लोग बस कंजर्वेटिवली मैनेजमेंट कर सकते हैं। बचाने का मतलब ये इतना डेंजरस डिजीज है, 100% मॉर्टिलिटी, मतलब फैटल डिजीज अगर हुआ किसी को तो मतलब मरना तय है, ऐसा है। तो नहीं रिस्क लेना चाहिए किसी को भी, किसी के भी जान की मतलब का कीमत होता है। तो रेगुलर वैक्सीनेशन ही एक ऐसा उपाय है जिससे रेबीज से बचा जा सकता है। तो शेड्यूल करना चाहिए, समय निकाल के हम लोग को टाइम पर जरूर वैक्सीन ले ही लेना चाहिए। तो कभी भी इग्नोर नहीं करें, मतलब किसी भी तरह का डॉग बाइट हो, कैट बाइट हो, इवन काव और हॉर्स का भी बहुत टाइम आते हैं, मंकीज, जैकल, फॉक्स, बहुत सारे मतलब जंगलों में कभी कभी निकल कर आते हैं शहरों में। तो कोई भी बाइट हो, रेबीज का इंजेक्शन जरूर लेना चाहिए। और जब अवेलेबल है और इतने अच्छे प्रोडक्ट आ गए हैं, अब तो ज्यादा विजिट्स भी नहीं करना आपको हॉस्पिटल, 5 बार हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत नहीं है, बस 3 डोज ले लेंगे हमारा काम हो जाएगा। तो सही है मतलब अ, एक बार, और जब अप्रूव्ड है WHO, तो ऐसा कोई डरने का भी बात नहीं है कि पता नहीं 3 डोज काम करेगा या नहीं। पहले तो 5 देते थे, देखिए हम लोग सब लोग धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, 31 डोज से 5 डोज तक पहुंच गए हैं, अब 5 डोज से हम लोग अब 3 में आ गए हैं। तो उम्मीद है जल्दी ही सिंगल डोज ये रेबीज, एंटी रेबीज वैक्सीन भी आ जाएगा। और जब मार्केट में अवेलेबल है तो ट्राई करने से पहले सोचना नहीं चाहिए। ये हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम अपने क्लिनिक पर किसी को बुला रहे हैं या फिर इंजेक्शन के लिए, तो हम लोग को भी फॉलोअप में देखना पड़ता है कि हाँ भाई इसका इस डेट था, आज वो आया नहीं। और पेशेंट्स के लिए भी रहता है कि यार उस दिन जो है मेरे घर पर ये काम है, वो काम है, पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं। तो जितना जल्दी ये शेड्यूल करके खत्म कर लें उतना अच्छा होगा। अभी 3 डोज है तो जल्दी से ये हम लोग ये करके खत्म कर सकते हैं, पूरा शेड्यूल मतलब कर सकते हैं कंप्लीट। तो अच्छा है, इसको जरूर ट्राई करना चाहिए सबको। Thank you, sir. Thank you very much to given very valuable information to our viewers. महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए सर थैंक यू। और आपने पूरे व्यूअर्स को जितनी भी क्वेरीज थी सारे को कंप्लीट किया। ऑल व्यूअर्स आर सेटिस्फाइड अबाउट योर अबाउट हिज क्वेरीज सर। तो आई थिंक अब कोई भी क्वेरीज नहीं होगी। व्यूअर्स एनी क्वेरीज फ्रॉम योर साइड? कोई भी क्वेरीज है तो आप बता सकते हैं। सर सेम क्वेश्चन रिपीट हो रही है तो आई थिंक मैं छोड़ देता हूँ इसे। ओके ठीक है, ओके। थैंक यू।
Manish, close the session. Manish. Thank you, sir. Thank you, Gaurav sir. Gaurav sir, to such gives us such a precious time to us. बहुत जरूरी था सर, ये एक जागरूक भी है और सभी के लिए थ्री डोज अपनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर। Thank you. और मजेदार रहा सर।